Good morning, Cooper's Club. Today is our monthly learning session, and the topic of this class today is mathematics of remedy differentiation. So, alphabetically, I will be taking remedies, and I have tried to formulate a mathematical formula for each and every remedy. This topic I will be taking intermittently with the presentation which we are having every month. So few of the remedies I have covered, so I would like to share this thing with you all. So first of all, I would like to pay tribute to Sir, to Dr. Henman Sir, and to all the patients who help us learn, and because of them we are doing hard work. So thanks to all the patients also. So we start with the presentation. Abrotanum. Here I have covered the remedy under two aspects. First are the keynotes. Physical keynotes are also very important. Physical PQRS are also important because many of the time you may enter the cases through this, particularly if you are in a hurry, especially if there are a lot of patients, then with these PQRS physical symptoms you can prescribe very easily. So abrotanum is marasmus of the lower extremities only. Marasmus can be of whole body, but it is affecting the lower extremities only. Ravenous hunger, losing flesh while eating well. So there is hunger, but eating well and losing flesh. This of losing flesh while eating well is autoimmunity. Okay? Because if a person is eating in high quantity, but still he is not developing the muscle mass. So somewhere there is some destructive or some process is going on which is not allowing the growth. So when the growth is not allowed, it is autoimmunity. So this is physical autoimmune thing for abrotanum. Now, child is ill-natured, irritable, cross and despondent. This is important that the abrotanum child is very irritable, very much cross, despondent, violent, inhuman. So the word written in Allen's is inhuman, would like to do something cruel. So cruelty is a syphilitic aspect. The intensity of cruelty gives the type of syphilis. If it is too much, the destructive process or doing cruel things to other is of high grade, even like doing murders and all. And that too, doing murder is fine, but torturing and then murdering is another level of syphilis. Face old, pale and wrinkled. The certain rubrics which are important: anxiety, diarrhea suppressed from. So whenever the diarrhea is suppressed, child goes into a state of anxiety. Even and adults can go into state of anxiety. Cruelty to animals, abrotanum plus 3 remedies. So very peculiar of abrotanum. This is the syphilitic aspect of abrotanum. Cruelty, like to do something cruel would, abrotanum single remedy. So you can imagine the mental perversion of this remedy. Wants to do something cruel. There is an innate desire to do something cruel. Development of children arrested. So above things, that means child is irritable, cross, likes to do something cruel, eating food, though losing flesh, plus development arrested. It goes in favor of genetic disorder.
So Abrotanum can be used in treating genetic disorders, but we are not using this remedy. Particularly when the genetic disorder is related to muscle pathology or muscle degenerative pathology, in those cases you can use. Fear diarrhea suppressed with single remedy Abrotanum. With diarrhea suppressed, child or a person goes into a state of fear. Handled being aversion. Child will not like to be touched or will not like to be handled by any means. Even a doctor wants to check this child, he will not allow. Not only the child but also the adults. So this is handling being aversion to. Moral feeling want of course, when there is cruelty, there is no moral feeling. So suppression is important, cruelty is important, handled being aversion is important in Abrotanum. So the mathematics of Abrotanum is anger, cruelty, suppression of discharges, plus marasmus, plus ravenous appetite, plus development arrested is Abrotanum. Finished. If you are getting 1, 2, 3, 4, 5 and plus 1, 6 things, prescribe Abrotanum nicely. Suppression is very important. Anything any physical symptom being suppressed goes into mind is Abrotanum. अपने को अगर ऐसे बच्चों का केस लेते हैं तो ये पूछना चाहिए कि एनिमल्स और उनके साथ ये कैसे करता है अगर वहाँ कंफर्मेटरी रूपये हो जाएगा कि एनिमल्स को और उनको क्रूएल्टी करता है बिना काम मारता है मतलब ऐसा होगा कि गली के जो कुत्ते हैं जब ये निकलता है ना इधर उधर हो जाते हैं तो वो उसका रुतबा ऐसा होगा, ठीक है। एक बच्चे का था ऐसा रुतबा कि उसकी मदर आके बोलती है कि साहब ये जब गली से बाहर निकलता है तो सब जो गली के कुत्ते हैं सब इधर उधर भाग जाते हैं। So this is the amount of yes. Second remedy, acetic acid. Acetic acid we have studied in depth from mind to the body. For more reference you can refer to our acetic acid video. So first, the look of acetic acid is important. Pale lean person with lax flabby muscles. Abrotanum there was marasmus, there was no muscle. Here the muscles are there but it is lax and flabby. Flabby means it will, it will be moving like this. Face is pale and waxy, as if some layer of wax is on the face. That much paleness will be there. Prostration after injuries is important. There is weakness after injuries. And now what is injury? Injury is something which you get from outside. And what is the injury he is getting? The injury which he is getting is the trouble from others which he wants to take. That is the injury for acetic acid. Then hemorrhagic tendency. And what is this dropsy? Dropsy again is accumulation. Accumulation is accumulating the troubles of others, borrowing troubles. Always remember acetic acid borrowing troubles. Never forget it. Jaan karke, if a person is taking troubles, he is not supposed to be there at a certain place, at a certain time. He will go. दोस्त है तो दोस्त के लिए जाना है, उसके साथ लड़ाई करनी है. This is borrowing troubles. कॉलोनी है तो कुछ हो रहा है, अरे ऐसे कैसे हो रहा है, he will go. एंड वो जो फाइट है वो उधर से ट्रांसफर होके इसके ऊपर आ जाएगी. He will take away the situation, everything on his own self. Better lying on abdomen. This is very, very important. Even in pregnancy, better lying on abdomen is a keynote of acetic acid. Yes. Ailment from grief.
So there is grief of acetic acid because he is accumulating things. So he is going into grief from mental shock, ailments, anxiety about his family. He is too much caring about family. He loves his family, acetic acid, and then borrowing from everyone. In complete, it is borrowing troubles. So, and borrowing and accumulating. Because of this accumulation, he goes into a state of delirium. This delirium is distension of abdomen, means accumulating things, and constipation with. Here also, constipation means it is complete block, accumulation. So even he is not accumulating good things, he is accumulating shit from all over people which are surrounding him. Love family for is acetic acid. So the mathematics of acetic acid is ailment from grief and shock, which is typical of acids. Then borrowing troubles, hemorrhagic tendency, prostration, dropsy is acetic acid. Okay. So there should be some grief, there should be some shock involved. Plus that shock is because I unnecessary borrowed troubles from all the people. घर वाले ये बोलेंगे कि इनको ज़रूरत क्या थी डॉक्टर साहब ये सब काम करने की, इनका कोई लेना देना ही नहीं था, इन्होंने ज़बरदस्ती बीच में इन्वॉल्व हुए एंड देन सारी चीज़ें इनके ऊपर आ गई. दैट इज आ बैल एंड मुझे मार. Aconite, as you all know, fear and fear and fear. Dry cold air aggravation is aconite. Like this season is aconite season. Along with that, fear means सर्दी आ गई, dry cold air is going, I am going in that dry cold air and I get a fear कि अभी ये dry cold air आ गई, now what am I supposed to do? Then he will fall sick. That is aconite. Fear pusillanimous. Pusillanimous means when a person does not have the courage. Very cowardly people who have this fear. This is fear pusillanimous. This is aconite. Why is this fear? I already said it is because of the hypersensitivity of the amygdala. Stramonium, aconite, they are amygdala remedies. So there is hypersensitivity of amygdala. So from there is problem. And why is this fear and anxiety coming? There is no base of this fear and anxiety. There is a delusion. Delusion, stomach, mental operations takes place in the pit of the stomach. So he is not thinking properly. He is working on the gut feeling. All his thought processes are going on the gut feeling. कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे डरना चाहिए तो डरना चाहिए. There is no logic. All the things are illogical. So that is why I took this rubric, so that you understand aconite ka thinking process. On this symptom, I had prescribed aconite to one patient with some problem, I don't remember. He said कि मेरी मदर जब वहाँ मुझे याद करती है तो मुझे पता चल जाता है कि वो मेरे बारे में सोच रही है, याद कर रही है, और फिर मैं फ़ोन करता हूँ उनको. So this is clairvoyance, conscious that his beloved miles away is singing a certain song. Aconite. ठीक है, ये कभी मिलता है तो straight away you can prescribe. Clairvoyance, conscious that his beloved miles away is singing a certain song, is aconite. Fear pusillanimous and delusion, stomach, mental operations takes place in the pit of stomach. The mind is in the stomach. So the logic is nowhere. Logic is gone. So aconite की mathematics लिखा नहीं, but aconite is just fear
fear arising from intuition. And see, this intuition is going where? This intuition of aconite is going into clairvoyance. Yes, Actea racemosa. Theme of Actea racemosa. Important physical symptom is mania following the disappearance of neuralgia. When the neuralgia is gone, mania comes. The conflict of Actea racemosa is very interesting. There is a sensation as if heavy black cloud has settled all over her and enveloped her head, so that all is in darkness and confusion. So there is a state of confusion. Okay? Remember this, that there is a state of confusion. And what kind of confusion? That the entire logic is surrounded by confusion. There is no gap. It means there is no reasoning, or there is no way from which he can come out of this confusion. This is peculiar. Person not able to come out of confusion. Okay? He is finding ways, but he is not able to see the ways. Like that pulsatilla case, hypertension, we had taken this rubric, delusion, dark cloud. He was not able to come out of that. He was not able to make out the decision whether he should leave the hometown and go outside. So there was a black cloud which was surrounding him. So similarly here also there is a black cloud and everything is in darkness and confusion. In pulsatilla, that confusion was different because he wanted support from the family. Okay? But here the conflict is totally different. Reflex from uterine disease. Everything is coming from the uterus. So somewhere the femininity is involved. Femininity is in problem. Sorry. Pregnancy, nausea, sleeplessness, false labor-like pains, sharp pains across the abdomen, abortion at 3rd month. What is this keynote signifies? False labor-like pains. And also there is abortion at 3rd month. Means prematurely this lady doesn't want pregnancy. She wants to terminate this pregnancy. Because of wanting to terminate, she is having those false labor-like pains. Otherwise, why would labor-like pains come? So she is in conflict with the child because she does not want the child. And the conflict with child comes from conflict with the husband. Otherwise, nature has given a gift to the females that you have the ability to bear the child and deliver. Yes. So, if a female wants to terminate the pregnancy prematurely, has aversion to pregnancy, aversion to child, then there can be false labor-like pains just to remove the child from the system. So it is again like autoimmunity, because child is a part of mother and she is trying to throw away that. So this is autoimmunity. So during labor, shivers in the first stage, convulsions from nervous excitement. So there is nervousness, and because of the nervousness there is convulsion. Rigid os, pains severe, spasmodic and tedious, aggravated by least noise. Least noise aggravates. Okay. Excessive muscular soreness. Then another impact of Actea racemosa is on the muscles. So muscular involvement, muscles also of the uterus. Okay. So muscles there also, and muscles in the skeletal system also, as well as the female reproductive system. So there is excessive soreness after dancing, skating or other violent muscular exertion. Why is
this muscular soreness because of these activities. I will discuss in the next slide. These rheumatic pains in the muscles of the neck and the back. Neck is important and back is important. Back is for support mostly and neck is for self-respect and esteem. Feels stiff. So there is stiffness. So somewhere, what is the conflict? There is a motor conflict also involved in Actea. Lame contracted. So there is contraction. There is no looseness. Everywhere there is contraction. Spine is sensitive from using arms in sieving, typewriting, piano playing. You might notice that the pains are coming when some activity is going on. Okay, so there is some problem in the activity. Conflict with respect to activity, conflict with respect to life which is involving some kind of job or some kind of activity. Rheumatism affecting the bellies of the muscles, pains, stitching, cramping, rheumatic dysmenorrhea. So this rheumatism which is affecting the belly, that is the bulk. Not the joints. It is the main bulk of the muscles that is being involved. So somewhere there is some problem in the movement. There is a stuck feeling, motor conflict. Rheumatic dysmenorrhea. Dysmenorrhea with muscles pain, with muscular pain. It's rheumatic dysmenorrhea. During menstruation, the more profuse the flow, the greater the suffering. This keynote nails the conflict of Actea racemosa. That whenever there is profuse flow, the suffering will increase. So somewhere there is suffering because of femininity. The theme of Actea racemosa, beautiful theme of Actea racemosa. Feeling confused about their decision. First, a married female wants to take decision whether I should remain married or whether I should take divorce. This is the confusion and this is the black cloud. She wants to take divorce but she cannot, because if she moves away, then there is a dependency on husband. What she is supposed to do after she gets separated from husband. Current situation is unpleasant for them, like a marriage or a relationship. Even before marriage also, the teenagers, they are having a relationship, and in that relationship also a female gets stuck. Whether I should leave this person, whether I will be able to get a better boy next time. He is bad, but whether I will be able to get a better opportunity. So this is the confusion, and because of this confusion she is not able to move out. This is the black cloud. So leaving the husband or a partner, it creates all sort of anxieties. So they stay even though not liking it. Feels caught, depressed and dark. Even pregnancy can cause such feeling, feel imprisoned by child. So when a child comes, now again that confusion whether I should be with him or not, this child further adds upon the conflict. Hating the limitation as a woman. So I told previously that there is something which is involved with respect to femininity. There is something about the femininity which is creating problem for this Actea racemosa. So any type of activity, she feels that because I am a female, the born and brought up of Actea is like that. Because you are a female, you should not do like this. You are a female, you should not go over there. So there is certain amount of limitation she experiences right from the beginning. So she has a perception that being a female is not worth.
So I should not be like a female. So there is another rubric here in Actea racemosa, mannish habit. So she goes into a state of confusion of identity. So female identity is affected in Actea racemosa because there is restriction as a female. So rheumatic pains come, and all those pains they come when there is movement. Restriction के कारण सब आता है. Yes. So this female जब भी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, there are restrictions, and that restriction is the pain which Actea racemosa is feeling. Now, whenever this confusion takes place, कि whether I should remove this, whether I should move away from the relationship or whether I should keep it, this confusion and confusion and confusion goes into a state of mania, insanity and hysteria. So this caught feeling creates a motor conflict causing rheumatism. Okay. So this is a beautiful explanation of Actea racemosa. There are so many females which undergo these type of conflicts. So you can prescribe Actea racemosa left and right. Is it working? So the mathematics of Actea racemosa is hating the limitation as a woman. There is a confusion, plus hating female organs. Why I became a female? There is a hate, stuck feeling, Actea racemosa. This stuck feeling also, in the previous slide I had mentioned rigid os. Rigid os is because whether I should give birth to this child or not. If this child comes out, then what is going to happen? My whole life will change. But in the earlier months of pregnancy, she might have a feeling that I should not keep this child. So it can abort in the early months. So in the 3 month itself, there is tendency for abortion. Then Aesculus. First, the keynotes of Aesculus. Very important statement is for persons with hemorrhoidal tendencies. Person who is having hemorrhoids for a long time, operated once, again appeared, operated twice, again appeared, this is hemorrhoidal tendency. So he has hemorrhoids in the genes. So this is hemorrhoidal tendency. Along with hemorrhoids, suffering with gastric, bilious and or catarrhal troubles. Fullness in various parts as from an undue amount of blood. There is congestion, there is venous congestion involved in this. Portal hypertension. You can use this remedy in portal hypertension as well as hemorrhoids. Important aspect of rectum. Most of us we are prescribing Aesculus on these local keynote symptoms very frequently. Never a case goes where once in a while we have not prescribed Aesculus. Somewhere it comes. Even if we have OPDs which are full and we don't have the time. So dryness and heat off, feels as if full of small sticks. This is the type of pain. Knife-like pains shoot up the rectum. Hemorrhoids are blind, painful, burning and purplish. The purplish color of hemorrhoid is important here. Purplish color. They are rarely bleeding. Rectum is sore with fullness. Fullness sensation is always there. It is a general sensation. Even in the mind also there is fullness. Fullness with anger. He is full with anger. Burning and itching. Constipation, hard, dry stool. Difficult to pass. With dryness and heat of rectum, severe lumbosacral backache is important.
Rectum and lumbosacral area is important. Stool is followed by fullness of rectum and intense pain in the anus for hours. For hours there will be pain. Alloy, ignatia, acid mure and sulfur. For hours there will be pain. ठीक है? Now dull backache in the lumbosacral articulation. Constant pain affecting the sacrum and the hips. Very important seat of action of Aesculus is the lumbosacral joint. Back gives out during pregnancy, prolapse, leukorrhea. When walking or stooping, must sit or lie down. So during pregnancy, the back gives away. Gives away means he not able to stand or not able to sit. Should lie down. लेटे ही रहना है, बैठ ही नहीं सकते, लेटे ही रहना है. Should lie down. So heaviness and lameness in the back. लेटे ही रहना है means कि no support. अपना ही वजन खुद नहीं झेल पा रहा है. So there is complete lack of support in the life. Paralytic feeling in the arms, leg and spine. Paralysis of spine की is remedy, Aesculus. These are the important physical keynotes for Aesculus. Hemorrhoids without constipation, single remedy, Aesculus. Remember this. Without constipation, single remedy is Aesculus. Hemorrhoids painful, kneeling ameliorates. If it is pain in the piles or the hemorrhoids, person will kneel, will bend down. It ameliorates. Only remedy is Aesculus. And the problem of Aesculus is this only. He does not want to bend down. Antisocial element है ये. He never bends in front of people. So those conflicts gives him hemorrhoids. Hemorrhoids purple. Strangulated also, Aesculus is the remedy. Hemorrhoids weather warm ameliorates. Single remedy, Aesculus. In warm weather, the hemorrhoids are better. Keynote. Another keynote is hemorrhoids wiping after stool aggravates. ठीक है? If you are wiping after cleaning, you get pain. Aesculus plus 6 remedies. Differentiate. Pain lumbar region, last vertebrae. L5. L5 is the seat of action of Aesculus. Pain, sacrum, stooping aggravates. Cannot stoop. As I already said, he cannot stoop. He cannot bend. Paralysis of spine, Aesculus plus 8. Different remedies. Okay, so these are the keynotes of Aesculus. So you can enter, if there are scanty data available, you can enter through these keynotes and prescribe. Rectum prolapse, night, single remedy, Aesculus. When there is a prolapse, only at night time is Aesculus. Rectum prolapse, hemorrhoids during hemorrhoids there is prolapse, Aesculus. Rectum varicose, single remedy, Aesculus. Means when there are varices, because of portal hypertension, if the varices are predominantly in the rectum, think of Aesculus. Now, important thing of stool is black hard, followed by white, followed by normal stool. Black, white and then yellow stools is Aesculus, single remedy. ये भी मिल जाएगा. You will get these keynotes. Okay, shall we proceed?
पेन लंबर रीजन, लास्ट वर्टिब्रे, पेन सैक्रम स्टूपिंग एग्रवेट्स हो गया, ओके ये हो गया. Now what is the conflict of hemorrhoid? According to GNM says that it is related to the rectal surface mucosa, but the science says it is because of the enlargement of the plexus. According to GNM, it is either a female identity conflict or a male territorial anger. Shit conflict is of submucosa. Shit conflict is of rectal submucosa. Identity and male territorial anger is of surface mucosa. ठीक है? Just remember this. Do not take shit conflict when the rectal mucosa is involved. In the mucosa, it is identity or territorial anger, depending upon the general laterality and the hormonal status. Lumbar is support. So what is the identity or territorial issue of this Aesculus? That we want to know, because all we know is only hemorrhoids, blind, only this much. So feels as if belong to inferior caste, wants to fight for injustice. ठीक है? But this rubric injustice cannot support, उसमें Aesculus नहीं है. Feels as if belong to inferior caste. So he feels that he belongs to an inferior caste. Mistakes repeated, learning slow, little reflection. The mind becomes sometimes dull and sometimes thinking process is fast. Finishes nothing, begins new things. Hurry and impatient. Mind is racing, active and industrious. In a way, he does something but he does not complete. Uncaring, awkward and inattentive. Bossy bulldog, but it is not mentioned in dictatorial. It is only mentioned in contradiction, aggravation. He cannot bear contradiction. Desire to escape through the windows is not much important. Does not recognize relatives, antisocial. This is peculiar of this. He is antisocial, does not recognize relatives, even neglects children also. There is a rubric, neglects children in Aesculus. So what I got here is the territorial anger conflict only. The anger conflict is very irritable, loses tempers easily, gains control slowly, miserably cross. The irritation is miserably cross. मतलब मिजरेबल है उसकी कंडीशन. गुस्से में इतना मिजरेबल अपने आप को और अपनी लाइफ को कर देता है वो गुस्से की वजह से. So that is the territorial anger of Aesculus. हर छोटी चीज से उसको anger, irritation, and he becomes extremely miserably cross. Extreme mental anguish when everything has been tried and there is no light left. सब कुछ करने के बाद में there is nothing left. Dreams of battle, fighting hard. Amorous ghost specters. Dreams of battles is important. He is fighting, always angry, always fighting with people. Antisocial. So this is quarrelsomeness, scolding, heat of face, Aesculus single remedy. Quarrelsomeness with heat of face, single remedy is Aesculus. So the amount of anger is intense in Aesculus. Forebodings. Forebodings means he will see the negative aspect of things beforehand. This is forebodings. Delusion, imagination, lost way his. So there is confusion that he feels that he is lost, and there is a delusion also that he loses his way. Loses his way means losing the identity. Where am I? Where am I standing? Who am I? Somewhere it is linked to your identity per se.
Another other things is business ailment from aggravates failure. Incomplete repertory. This is business failure from ailments is Aesculus. Contradiction ailment from is nobody should contradict me. If somebody contradicts, I become angry. If I become angry, I develop piles. Confusion of mind, knows not where she is, nor whenever came to objects around her. She does not know the surroundings as well as the people. Okay. So the mathematics which I understood is quarrelsome, antisocial, sensitive to contradiction, mortification, plus hemorrhoidal tendency plus lumbosacral problems is Aesculus. Okay, that quarrelsomeness. See, when you are taking a case, person will come, you will ask him questions, and sometimes you force the patient to answer. This contradiction will make him angry. And then this quarrelsomeness will be shown on his face. The face will become heated. The expression will become changed. एकदम लाल हो जाएगा face. With hemorrhoidal tendencies is Aesculus. Bingo. ठीक है? If a person with hemorrhoids is coming to you and for small thing he becomes angry with heat of the face, with tendency to quarrel with you, even you have to step back. Aesculus दे दो. Mind plus body. छोटी चीज है, but observation is very very important. What you will get, you don't know. So sir always used to say that we should have our antennas open. So sit with open antenna. Agnus castus, again a beautiful remedy, less used. Very beautiful conflict and understanding of Agnus. Ailment from celibacy. Celibacy means not allowed to do something. Ailment from sexual excess. If allowed also. If allowed also problem, if not allowed also problem. Okay, so both ways. Either excess or either no. Both aspect में Agnus has problem. Business incapacity for. See, there are two stages in Agnus. One is the stage where there is increased activity. Other stage is when there is decreased activity. High confidence, low confidence. High self-worth, low self-worth. Okay. Business incapacity for. Confidence, want of self-confidence. We all know that Agnus is a low confident remedy. Why this low confidence come and how does it comes? Contemptuous of self. Ki I am at fault. What kind of contempt is this? It is related to, the contempt is related to this aspect. The excess which he is doing. This causes the contempt. Death, presentiment of soon and that she cannot be helped, believe that she will die. Single remedy, Agnus. Feeling that she is going to die and she cannot be helped. This is the height of despair and resignation. There is that much amount of resignation that the help is also not being appreciated, not even required. Nahi aayega, will not come. Why? Because it is my fault. ये जो तकलीफ मैंने शरीर में पैदा करी है, ये मेरी अपनी गलती की वजह से हुई है. It is me who has developed this problem because of my own fault. Haughty, एक तरफ haughty, एक तरफ
कंटेम्प्टुअस ऑफ सेल्फ, एक तरफ तो बाहर हॉटीनेस दिखा रहा है और एक तरफ अपने आप पे कंटेम्प्ट दिखा रहा है. सो आई सेड नो, देयर आर टू ऑपोजिट हाई एंड लो स्टेट ऑफ एग्नस. Sadness, impotency with. Impotency means not able to do something. Person feels that I will not be able to do anything. And because of that, there is sadness. This Agnus, which I have studied, which I have prescribed, this Agnus is not in a state of higher evolution. Agnus remedy is in the state of lower level of evolution only, at the level of animals. Because only thing which he is concerned about is the physical sexual part, and no other thing he is concerned about. So he is in a state of animalistic behavior. If that part is good for him, then he is happy. If that part is at fault, then he becomes sad. Sadness milk after disappearance of. See, if I am not performing, performance is either through the discharges, male is through discharge and female is through milk. So if I am not able to give to the environment what I am supposed to give, then I feel sad. Delusion. Initially, what was the aspect of Agnus is excess of physical activity doing, almost like an animal. Because of this excess of things, system naturally will wear down. Why it will become wear down? Because it has to be there. If there is overuse, then somewhere the system will go down. If it is going down, then in the process, fear health ruined that she has. So I have ruined my health. That fear, when I am doing at a higher scale, and if I am doing excess of sexual activity, there is delusion of wealth. There is delusion of wealth. So the wealth of Agnus is the performance. Physical performance related to the sexual activity is the wealth. Okay? Now, if this wealth becomes lesser and lesser and lesser, he feels that he is worthless. So this, कैसे जाते हैं? yes, जब वो कहते हैं कि तब मैंने इनिशियल एज में बहुत ज़्यादा मास्टरबेट किया, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरी हेल्थ खत्म हो गई. Think of Agnus. So state of worthlessness. Further, worthless is delusion, nobody being. I am nobody. Because he recognized his identity with that physical performance thing. फिजिकल परफॉर्मेंस की वजह से उसने अपनी आइडेंटिटी फिट कर ली. अभी दैट इज लॉस्ट, देन आई एम नोबडी एंड आई एम वर्थलेस. तो बीच में कंटेम्प्टुअस ऑफ सेल्फ इसी वजह से आता है कि बिकॉज ही फील्स दैट बिकॉज ऑफ हिज कर्मा ही इज सफरिंग. सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एग्नस. सो एक्सेस ऑफ sexual activity, which is the wealth, followed by impotency, going into worthlessness, is Agnus castus. My confidence is my power, sexual power, otherwise I am useless or a loser, is Agnus castus. Bingo. So it is affecting your lower chakras. The base chakra, it is affecting that chakra. So in the upcoming class, I will further give you the details.
So this is the mathematics of Agnus castus. Going from haughtiness to low confidence, going from excessive activity to despair, resignation, delusion of delusion worthless, delusion nobody. Now alumina. Alumina you already know, we have discussed many a times. The keynote of alumina is adapted to person who suffers from chronic disease, the aconite of chronic disease. It is labeled everywhere. In all the literature, it is the aconite of chronic disease. In chronic disease, you will invariably give alumina, you will prescribe. Anyways, so in alumina, there is kind of slowness everywhere. Mind is slow. Because the mind is slow, the perception is lagging behind. So time passes too slowly. An hour seems half a day. There is excess of slowness. Inability to walk except with the eyes open. The nervous system is at fault. When this keynote you can explain with a feeling that the nervous system need to get some stimuli from the environment. Then and then only alumina will react. The system of alumina is not autonomous. This is very important. The system of alumina is remote controlled. It is running by the remote control of some other person. That is why cannot walk except with eyes open. She need to get the stimuli from some other person. क्या हुआ तुमको? अरे तुम बताओ ना. So the stimuli has to come from some other person. So the nervous system is not registering or not autonomous. So the amount of dependency of alumina is too much. Abnormal appetite, craving for starch, chalk, charcoal, cloves, coffee, tea ground acids and indigestible things. Potatoes disagree is important. Always remember. आलू नहीं खा सकती है एलुमिना. आलू खाते ही डॉक्टर साहब पेट चढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. स्ट्रेट अवे एलुमिना. एक ही रेमेडी है ना, ओनली वन रेमेडी, नो अदर रेमेडी. सो पोटैटो इज एलुमिना. आलू का पराठा नहीं खा सकती हूँ, फ्रेंच फ्राइज नहीं खा सकती हूँ. पेशेंट ऐसे बोलेगा, ये थोड़ी बोलेगा आलू खाने से डॉक्टर साहब कल फ्रेंच फ्राइज खाए थे और उससे कॉन्स्टिपेशन हो गया. ओके, द लैंग्वेज विल बी लाइक दिस. Now, constipation, as I said, the system of alumina is not autonomous. So, when there is constipation, there is no desire. When the system is not autonomous, there will be no ability to pass the stool. In fact, no ability to do anything until there is large accumulation. अभी वो gravity काम कर ले तो एक अलग बात है. इतना सारा स्टूल इकट्ठा हो गया. If the gravity is assisting, then no problem, she will pass. Otherwise, there is जो gravity को लगाना पड़ता है. That is what. This is the peculiarity which we need to understand. कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करेगा वो दूसरा व्यक्ति करेगा. ग्रेट स्ट्रेनिंग मस्ट ग्रैस्प द सीट ऑफ क्लोजेट टाइटली. अभी स्ट्रेन भी करने का है तो भी कुछ नहीं आउटपुट है, क्योंकि वो स्ट्रेनिंग भी बिल्कुल इरेगुलर एफर्ट है. वो एफर्ट जो है उसका आउटपुट नहीं है, बिकॉज वट एवर द मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, जो भी मूवमेंट हो रही है, द रिजल्टेंट इफेक्ट इज जीरो. सो देर इज कंफ्यूजन. ठीक है, सो इन द सिस्टम देर इज कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन इन द इंटेस्टाइन ऑल्सो. सो वो मूवमेंट करने के बाद भी द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज दिस, then the stool will come out.
if the resultant force is null bata null, then nothing comes out. The stool is hard, knotty like laurel berries, covered with mucus or soft clay adhering to parts. So the stool is not being removed. That much is the dependency of alumina. Imagine, इतनी डिपेंडेंसी है. तो वो डिपेंडेंसी आपको तुरंत दिख जाएगी. विदिन अ सेकेंड आके बैठेगी. द आईज विल टर्न टू द कंपेनियन. वहीं एलुमिना खत्म हो गई. डिसाइड, आई हैव गिवन लेफ्ट एंड राइट एलुमिना ऑन दिस थिंग. Even soft stool requires great straining. मतलब कि see the height of dependency, that even a soft stool cannot be removed. In cold air during winter, while sitting from eating potatoes, after eating soups on alternate days at new and full moon. This is the aggravation of alumina. Even soup causes aggravation. Now the theme of alumina is confusion and depersonalization. Agreed? Confusion is so evident that it is observable in all activities. In the pathology, in the mind, in the person, कूट कूट के पैथोलॉजी भरेगी. एलुमिना पेशेंट विल नेवर बी एबल टू ड्राइव. कार नहीं सीख पाएगी, ना एक्टिविटी मतलब टू व्हीलर भी नहीं सीख पाएगी. इतना कंफ्यूजन है. ड्राइविंग में तो कितनी अलर्टनेस चाहिए. सो ड्राइविंग विल बी डिफिकल्ट. सो ड्राइविंग तो छोड़ो, साइकिल भी नहीं सीख पाएगी वो. बाइसिकल भी वो नहीं सीख पाएगी. वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, उसमें भी बैलेंस चाहिए. तो देयर इज नो बैलेंस. अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, deep delusion of alumina. Consciousness belongs to another. Delusion, consciousness belongs to another. यहाँ आइडेंटिटी तो छोड़ो, the consciousness is belonging to another. Delusion, consciousness outside of his body, his consciousness were. मतलब ये जो सिस्टम है, nothing is there in the system. Everything is being controlled from the outside. Delusion head belongs to another is alumina. Delusion head separated from the body, head is. कुछ भी नहीं है. There is no nervous system. Actually nervous system ही नहीं है, ये मान लो. Because nervous system नहीं है, तो वो nervous system जो connection है वो दूसरे से करेगी. So alumina will be so dependent on a person. और वो डिपेंडेंसी होगी. इमेजिन, अगर आप डिपेंडेंट हो तो क्या होगा. शुरू में तो लव अफेक्शन है, तो वो डिपेंडेंसी ठीक रहेगी. बाद में क्या आदमी है ये, क्या आदमी है, क्या लेडी है ये, ऑलवेज डिपेंडेंट. अरे यार तुम थोड़ा काम तो तुम खुद कर लो. सो बाद में जाकर के क्वारल्स, बाद में जाकर के इंसल्ट्स, बाद में जाकर के क्रिटिसिज्म. और वो क्रिटिसिज्म कहाँ लगेगा? सीधा जाके बोन्स पे लगेगा, हिट करेगा. तो नर्वस सिस्टम तो ऑलरेडी गॉन है इधर भी. क्योंकि एलुमिना किस सिचुएशन से पैदा होगी? एलुमिना विल पर्सनैलिटी और एलुमिना सोल विल कम इनटू दैट पर्टिकुलर वूम वेयर द सिचुएशन इज ऑफ टोटल डिपेंडेंसी. जहां पे डिपेंडेंसी मिलती है ना, उसी यूट्रस, उसी वोम में, उसी एनवायरनमेंट में वो आती है. बिकॉज द पंच तत्वास, एयर, वाटर, एलिमेंट, ऑल दोस पंच तत्वास, दे accumulate along with the consciousness at a particular situation which is appropriate for it. The environment should be favorable. वो एनवायरमेंट फेवरेबल होगा तो ही वो पंच तत्व, सोल एंड कॉन्शियसनेस, वो सब उस एरिया के अंदर में आएंगे.
For lachesis there has to be an environment. For alumina also environment. तो अब यहाँ alumina के लिए जो environment है वो है dependency का, कि यहाँ मैं dependently रह सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आ गई हूँ. अगर independently नहीं रह सकती, अगर मुझे independent रहना है तो वहाँ alumina नहीं आएगी. The soul of alumina will repel this situation. This is how our remedy personality or the genetics of the personalities they come. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस. अभी बदला लेना है तो मर्क सोल आएगा. ठीक है, अगर मदर इन लॉ से मुझे बदला लेना है, मर्क सोल आएगा. अगर मुझे लोगों की रक्षा करनी है, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट पीपल, देन कॉस्टिकम विल कम. ठीक है, द सोल ऑफ कॉस्टिकम एंड कॉस्टिकम पर्सनैलिटी विल कम. सो द थिंकिंग प्रोसेस विल अट्रैक्ट our remedy consciousness. Why? Because in the organon it is written that when we are preparing the remedies, for plant remedy it is written, when we are potentizing the remedies, what we are doing is we are, through our drug proving, we are able to express the soul of the plant. What is the soul of the plant? The soul of the plant are the mental symptoms which we are getting. That is the soul of the plant. So, when this background is being prepared, the soul of that particular remedy comes. So, this is how, and this is what we are going to learn in the next class. So, delusion identity is someone else she is. Delusion possessed being alumina. Delusion robot one is. So feeling that he is a robot. Possessed being. वो इसमें एक बात आती है, रोबोट वन इसमें वे मुझे तो रोबोट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी एक अपन नहीं, वन शेज हाँ कर सकते हैं, बट एल्यूमिना को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. एल्यूमिना तो इस्तेमाल होना चाहता है. ये तो चाह रहा है. कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे को तो कहता है जैसा मुझे करना पड़ता है. हाँ. Then we can also take this. And in that case you can take antagonism also. कि मेरी तो इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ रहा है. दिस इज एंटागोनिज्म. तो वो भी सोचा जा सकता है. ठीक है, अगर इफ यू फील कि पैथोलॉजी के अंदर में भी ये डुअलिटी दिखती है और माइंड में भी ये दिखती है तो उसको पकड़ लो. बात हुई थी ना कि मुझे तो प्रेगनेंसी चाहिए, हाँ, बॉडी एक नहीं बना रही है. हाँ, then we can think of antagonism. हाँ, ऐसा ही है ना कि भाई रिश्ता है, फीमेल वांटेड प्रेगनेंसी, मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में बनती नहीं है. शुरू में तो खूब झगड़ा, डिवोर्स के लिए काउंसलर के पास दे आर डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट एक इशू हो जाता है, देन देयर इज प्रेगनेंसी नॉट हैपनिंग. अभी प्रेगनेंसी इज नॉट हैपनिंग, सो समवेयर देयर इज अ थॉट प्रोसेस विच इज देयर कि आई शुड नॉट बी प्रेग्नेंट. अभी प्रेगनेंसी चाहिए बट इस पार्टनर के साथ नहीं चाहिए. दिस इज एंटागोनिज्म. अभी क्या होगा, ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी. प्रेगनेंसी तो चाहिए तो एग तो बनेंगे, ओवरी तो काम करेगी, बट इस हस्बैंड से नहीं चाहिए तो वो जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाएगी. सो दिस इज एंटागोनिज्म. ओके, देन डिल्यूजन रोबोट, देन डीपर्सनलाइजेशन. तो पर्सन जो है वो बिल्कुल ही डीपर्सनलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी. Delusion seeing cannot see, he transfer himself into another and only then he could see. कितना ब्यूटीफुल डिल्यूजन है कि दूसरे के अंदर में ट्रांसफर अगर खुद को करेगा तभी उसको समझ आएगा कि क्या हो रहा है, तभी उसका लॉजिक उसके समझ में आएगा कि व्हाट इज हैपनिंग. सो these delusions I am just trying to amplify. I just want to give the imprint कि जब यहां से जाओ तो यू शुड गेट एन इम्प्रिंट दैट ये एल्यूमिना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. तो डिल्यूजन सी समथिंग व्हेन ही समवन एल्सेस आई सीम्स एज दो ही सॉ थ्रू. दूसरे की आंख से देखा है, इफ ही सीइंग थ्रू समवन आईज ही फील्स दैट ही इज सीइंग.
This is all delusion. Delusion, strange voice seemed, strange her own. इतना डिपर्सनलाइजेशन है कि जो अपनी वॉइस है वो भी उसको स्ट्रेंज लगने लगती है. ठीक है. एंड उसको ये लगता है कि वॉट एवर ही इज सीइंग, ही इज नॉट सीइंग थ्रू हिमसेल्फ, ही इज सीइंग थ्रू सम अदर्स आईज. सो द डिपेंडेंसी, द हाइट ऑफ डिपेंडेंसी. The mathematics of alumina is I do not exist, I am you. Finish. This is alumina in one line. I do not exist, I am you. Okay. Now Ambra grisea, the beautiful theme of Ambra grisea. So now what all remedies we have studied? First was Abrotanum. Abrotanum shade was totally cruel, totally inhuman, along with marasmus plus development plus clock, cross and irritable and increased appetite and suppression. That was Abrotanum. Always remember this. Second was acetic acid, waxy pale face, borrowing trouble, dropsy, hemorrhage and weakness, prostration. This is acetic acid. Then aconite, fear and pusillanimous and thoughts coming from the stomach. That was important. Then Actea racemosa is, there is restriction being a female. Everything arising from the female organs. Then affections of the rheumatism, of the muscles, the motor conflict, the stuck feeling and the confusion. Going into mania, insanity, hysteria. Then we saw alumina. Alumina is again confusion. Ki I am not myself, I am what he is. I exist in the other person, someone else. अच्छा, पायरोजन का अलग है. पायरोजन में है ना कि डिल्यूजन आई एग्जिस्ट. तो यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है ना पायरोजन की, वो अदर पर्सन से लिंक्ड है. एलुमिना का क्या लिंक्ड है? एलुमिना का लिंक तो है कि भाई मैं हूं ही नहीं, वो है. पायरोजन का है कि वो है तो मैं हूं. एग्जैक्टली. वो है तो मैं हूं, मैं नहीं हूं वो है, इज एलुमिना. यस, एग्जैक्टली. दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस. नाउ एम्ब्रा ग्रीसिया. एम्ब्रा ग्रीसिया for children, young girls who are excitable, nervous and weak, nervous affection of old people, nervous, worn out. ठीक है. Those young girls who are very much excitable, very much nervous, they have nervous affection. Even old people and nervous, worn out. Worn out means who are quite weak. Lean, thin, emaciated person who take cold easily. Great sadness, sits for days weeping. So there is amount of depression here in this remedy. Too much of depression. After business embarrassment, unable to sleep, must get up. Actea and sepia. Okay. So business embarrassment is important for Ambra grisea. इसका business embarrassment important है, different है. Actea का अलग था. Actea का इसलिए था because I am a female, I am restricted, I am not supposed to work, the environment is restricting me. उस वजह से business failure हुआ है. And the embarrassment comes to me. वो है Actea racemosa. और यहाँ is totally different. यहाँ पे उंगली, the fault is me. Ranula with fetid breath. Observational rubric. If there is ranula and there is fetid breath,
Thuja and Ambra. Differentiate. One is brittle, one is not brittle. Khatam. Sensation of coldness in the abdomen. The presence of others. Even the nurse is unbearable during stool. Frequent ineffectual desire which makes her anxious. This is very important keynote कि why other person is making Ambra grisea uncomfortable. Alumina को तो दूसरा व्यक्ति चाहिए. Alumina requires some other person. But Ambra grisea doesn't require. Ambra grisea wants that I should be alone. Nobody should observe me. Discharge of blood between periods at every little accident, a long walk after every hard stool, etc. This is a keynote. Leukorrhea, thick bluish white mucus. Thick bluish white mucus. Only at night. Bluish white and at night. I have till now not yet come across a bluish white leukorrhea. अभी तक मुझे तो नहीं मिला है. Violent cough in spasmodic paroxysm with eructations and hoarseness. Words, talking or reading aloud. Evening without morning with expectoration. Whooping cough but without crowing inspiration. ठीक है. ये क्या है? Whooping cough but without crowing inspiration. Whooping cough में जो typical whooping cough होता है वैसा नहीं होगा. क्यों? Out of embarrassment. उसको खांसना भी है तो ऐसे खांसना है कि उसको embarrassment नहीं होना चाहिए. अगर हॉल में वो बैठी है तो इस तरह से खांसेगी या इस तरह से स्नीज करेगी. वो होते हैं ना कुछ लोग. तो that is the body language और that is the activity of Ambra. ठीक है. तो ये without crowing inspiration वाला जो है it is because of the embarrassment. अभी embarrassment कैसे आता है वो समझेंगे अपन. अभी थीम क्या है? It is prepared from the morbid product of sperm whale. Remember this morbid product. Ambra grisea is over. Ambra grisea is equal to morbid product. Where is this morbid product coming? From self. So what are the morbid products? Stool, vomit, all these things. So if a person feels that I have something wrong in myself, I am a morbid product. Person starts feeling that he himself is a morbid product. If he feels that he is a morbid product, then he will be embarrassed going in front of people. क्या होगा? लोग देख लेंगे. क्या क्या बोलेंगे? कैसे कैसे लोग होंगे? दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं? What they are going to say about me? What are they going to do about me? And what impression they are going to make about me? So this embarrassment is extreme. It is always directed to self. I am at fault. I am at fault. मेरे में ये गलती है. I have such problem. So there is extreme self-consciousness of self leading to embarrassment and going into self-disgust. ठीक है? So extreme embarrassment going into self-disgust. Why? Because I am the morbid product. This is the theme of Ambra grisea. I am a morbid product. So I am embarrassed about myself. So I hate myself. Ambra grisea. This is the core of Ambra grisea, from where all other things, all other symptoms of the mind and body are arising. Ailment from business failure, ailment from cares, worries, ailment from embarrassment, ailment from fortune, from reverse. These are the ailments. Business failure. Business failure कैसे होगा? If a person is having a fault in himself, performance fault, so business failure. Cares, worries,
केयर्स वरीज से, एम्बेरसमेंट से, एंड फॉर्चून फ्रॉम रिवर्स ऑफ। रिवर्स फॉर्चून से क्या होगा, उससे भी एम्बेरसमेंट आता है ना, कि इतना पैसे वाला था और अभी ऐसा हो गया। हाँ, तो अभी इन सारी चीजों से अल्टीमेट जो रिजल्ट है विल बी एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट से क्या होता है कि लोगों को दिखाने लायक नहीं बचता है व्यक्ति, ठीक है। इतनी शर्म आती है कि मैं अपना फेस लोगों को कैसे दिखाऊं, तो इसीलिए उसको एवर्जन टू स्ट्रेंजर होता है, एवर्जन टू एनी पर्सन। स्ट्रेंजर तो एक पार्ट हो गया, बट एवर्जन टू एनी पर्सन, ये मान लो। देन अब जो लोग होंगे वो किस तरह के लोग होंगे, जो अगर मेरे में गलती है तो उस गलती को हाईलाइट करने वाले लोग कितने होंगे। दुनिया किसके लिए है, मजाक उड़ाने के लिए है, ये एक फैक्ट है। अगर किसी का कोई लूप होल मिलता है तो लोग मजाक तो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, ये फितरत है। तो अब कैसे लोग होंगे, डिल्यूजन फेसेस सीज डायबॉलिकल फेसेस क्राउड अपॉन हिम गेट अवे ऑफ देम कैनॉट। व्हाट इज डायबॉलिकल? Diabolical is derived from, I think, Latin word diabolo, which means devil, devilish। जो उनके फेसेस हैं लोगों के, they are devilish। और उन लोगों से मैं अपना पीछा कैसे छुड़ाऊंगा, cannot get away from them। ऐसे लोगों से मैं पीछा कैसे छुड़ाऊंगा। तो ये जो एम्बेरसमेंट है, ये मेरा एम्बेरसमेंट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो इट इज ऑल अबाउट हाइडिंग। तो एम्बरा जो होगी वो हाइड करेगी, हाइड करेगी तो क्या बनाएगी, ग्रोथ, सिस्ट, यही सारी चीजें बनाएगी ना सिस्टम में। देन एक इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, क्वेश्चंस स्पीक्स कंटिन्यूअसली इन। क्वेश्चंस के अंदर में बात करती है, डॉक्टर साहब हो तो जाएगा ना, डॉक्टर साहब आता तो है ना, तारक मेहता के बापूजी, आता तो है ना, हो तो जाएगा ना, सीखा तो है ना बराबर। तो क्वेश्चंस आस्क कंटिन्यूअली। डिसकंटेंटेड विथ हिमसेल्फ विथ गुड फॉर नथिंग सेंसेशन ऑफ बीइंग। अरे मेरे में ये कमी है, छह बेकार, सब कुछ बेकार है, अब क्या करूं, दूसरों के पास में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर ही क्यों है। तो ये डिसकंटेंटेड फीलिंग आ गई, एंड गुड फॉर नथिंग सेंसेशन ऑफ बीइंग में आ गया ये, एंड डिस्गस्ट बॉडी ऑफ हर ओन। मेरे में ही क्यों कमी है, मैं ही गंदा हूं, मेरे में से ही क्यों स्मेल आती है, मेरे ही पाँव, मेरे सॉक्स में से स्मेल आती है, ठीक है। एंड स्टूल में क्या है, मेरी स्टूल में इतनी स्मेल आती है कि लोग एम्बेरस हो जाएंगे, तो इसीलिए स्टूल नहीं जाना है, 2-3 दिन तक होल्ड करके रखेगा। यूरिन को लेके उसको एम्बेरसमेंट है तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। यूरिन से स्मेल आती है, या यूरिन में बहुत टाइम लगता है, प्रोफ्यूज यूरिन आता है, वॉट एवर इट इज, अल्टीमेट रिजल्ट इज एम्बेरसमेंट। और उससे बचने के लिए फिर वो कवर अप करेगा चीजों को। एंजाइटी स्ट्रेंजर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, कि अब ये आदमी जो मुझे नहीं जानता है ये क्या इंप्रेशन लेके जाएगा मेरा, तो उससे उसको एंजाइटी होती है। देन कंपनी, टोटली एवर्जन टू कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स। देन क्या होगा, इनिबिशन में जाएगा। इनिबिशन मीन्स अपने आप को कंट्रोल करके रखना। वो किस फेज में जाएगा, रिजर्व्ड फेज में चला जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, रिजर्व नेचर में चला जाएगा। एंड ये इंपॉर्टेंट रूब्रिक है इसका, परफ्यूम लव्स टू यूज परफ्यूम। जो अपने आप से एम्बेरस होगा ना, वो एक्सिस में परफ्यूम्स लगाएगा, ठीक है। क्योंकि जिसको अपनी बॉडी से कुछ प्रॉब्लम होगी ना, वही परफ्यूम लगाएगा, एक्स्ट्रा 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 लगाएगा। मतलब वो वहां खड़ा होगा तो वहां से पता चल जाएगी स्मेल, तो ही विल यूज
द अमाउंट ऑफ परफ्यूम एक्सेस। हाँ, तो अभी उसको एनवायरनमेंट देखो, उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम यह है कि मेरा एम्बेरसमेंट कोई और पढ़ ना ले। नोबडी शुड बी एबल टू कैच माई एम्बेरसमेंट। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? मी वर्सेस द एनवायरनमेंट। मी का तो पता हो गया, कंटेम्प्ट में आ गया। अभी एनवायरनमेंट कैसा कैसा वो परसीव करता है। एनवायरनमेंट उसको डायबोलिकल लगता है, दूसरा सारे के सारे दुश्मन है, कि अगर उसकी कोई एम्बैरेसिंग चीज पता लग गई तो दे विल ट्राई टू स्प्रेड द र्यूमर। तो दिस इज डिल्यूजन, एनिमी सराउंडेड बाय एनिमीज। अब इसमें जैसे अपन ने इन द गैलेवर्डिन्स क्लास वी हैव डिस्कस क्रोटेलस हॉरिडस। वो क्रोटेलस हॉरिडस का परसेप्शन फॉर एनिमीज वाज टोटली डिफरेंट। उसको ये लगता था कि सारे मेरे दुश्मन हैं एंड देयर इज अ नीड फॉर प्रोटेक्शन। यहाँ पे जो एनिमी है वो इट इज बिकॉज ऑफ द एम्बेरसमेंट आता है। देन ये डायबोलिकल फेसेस आई ऑलरेडी टोल्ड। देन फेसेस सी इज डिस्टॉर्टेड, फेसेस सी इज अगली। गंदे लोग हैं, भद्दे लोग हैं, ये सारे के सारे, मतलब दुनिया गंदी है। एम्ब्रा क्या बोलेगा? ये दुनिया बहुत गंदी है, उसका टॉपिक ही यही होगा, ये दुनिया गंदी है। डॉक्टर साहब कैसे कैसे लोग हैं और उनको कुछ भी पता नहीं चलता, किसी के लिए कुछ भी बोल देंगे, रूमर स्प्रेड कर देंगे। अरे रूमर क्या, वो तो सही है। रूमर स्प्रेड करेंगे, मेरे लिए कितना कुछ बोल देते हैं लोग, क्लास में मुझे ऐसे बोल देते हैं, जरा सी बात होती है तो उसका इशू बना देते, उसको परसेप्शन ऐसा होने लगता है। और किसी को भी वो अपना नहीं बना पाता है, बिकॉज ही सीज फिगर्स, सीइंग फिगर्स स्ट्रेंज। बिकॉज कोई भी पास में आएगा तो वो उसकी गलती पकड़ लेगा, तो अगेन वो एम्बेरसमेंट वाले लूप में जाएगा। तो ही डज नॉट वांट एनी पर्सन नियर हिम, तो कोई फ्रेंड नहीं होगा उसका। एवरीबडी विल बी स्ट्रेंजर फॉर एम्ब्रा ग्रीसिया। एक दोस्त, कितने दोस्त तो साहब है ही नहीं, और डॉक्टर को भी बताने से हिचकेगा। लास्ट रिजॉर्ट में जब उसको प्रॉब्लम ही है, उसमें से भी 50% चीज बताएगा, और बाकी सब चीजें भी वो इनिबिशन में है ना, वो नहीं बताएगा हिस्ट्री में। देन फ्राइट भी है उसको, इमेजेस फैंटम सीज फ्राइटफुल। स्टामोनियम का फ्राइट अलग है, एकोनाइट का अलग है, इसका फ्राइट अलग है। ठीक है, इसका अपनी एम्बेरसमेंट के एक्सपोजर का है प्रॉब्लम, अपनी मॉर्बिडिटी एक्सपोज ना हो जाए। डिल्यूजन इन्फ्लुएंस वन इज अंडर अ पावरफुल, डिल्यूजन परसिक्यूटेड एंड परस्यूड। तो ऐसे लोग पीछे लगे हुए हैं, पीछा करेंगे, और ऐसे लोगों से मैं पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूं, पावरफुल इन्फ्लुएंस अंडर। ठीक है, तो ये एम्ब्रा ग्रीसिया का वर्जन है इन सारे डिल्यूजन का। So the theme or the mathematics of Ambra grisea is I am a morbid product and I am embarrassed by myself. Ambra grisea chapter close. ठीक है, ये चीज कभी भी चेंज नहीं होगी। Ambra grisea will be like this always. I am a morbid product and I am embarrassed by myself. Ambra grisea. Now ammoniums. अमोनियम्स आ गए थे तो मैंने सोचा कि एक कॉमन थीम बता देते हैं अमोनियम्स की। अमोनियम इज इक्वल टू रिजेंटमेंट, रैंकर एंड ग्रज। ठीक है, रिजेंटमेंट, रैंकर, ग्रज। सेंट्रल थीम इज रैंकर, अनदर वर्ड माइट बी ग्रज और एम्बिटर्ड। गॉट इट? सो इट इज द एम्बिटर्ड फीलिंग और द रिजेंटमेंट। नाउ व्हाट इज रिजेंटमेंट? रिजेंटमेंट को डिटेल में समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिजेंटमेंट। द वर्ड रैंकर, एग्जांपल देते हैं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, उसके ग्रैंडफादर का मोटर गैरेज जो था वो किसी एक व्यक्ति ने बाय धोखा, बाय डिसेप्शन साइन करवा के ले लिया। उस व्यक्ति को आज भी, उस मेरे फ्रेंड को आज भी उस व्यक्ति के लिए क्या है? रैंकर एंड रिजेंटमेंट। ठीक है, कि कैसे ले लिया उसने।
So this is a deep twisted bitter type of anger in your heart. It is not just anger, it is having that bitterness. वो उस आदमी का गला दबा दूं मैं, उसकी पुश्तें खराब हो जाए, उसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए. दिस इज embittered feeling in the heart. रैंकर को कैसे समझेंगे कि इसके अंदर में डार्क मिजरेबल बिटरनेस है, एज इफ देर इज सम काइंड ऑफ कैंकर सोर. अब वो कैंकर सोर क्या होता है, मतलब नासूर जो होता है ना, वो बॉयल अगर आपके यहाँ हो गया एंड इट इज 24/7 हियर, तो कैसा पेन फील होता है, कितना गुस्सा आता है. दैट इज द फीलिंग ऑफ अमोनियम्स. ठीक है, ऐसे याद रखो कि एक बॉयल अगर हो जाए, उसमें जो पेन आप कॉन्स्टेंटली फील करते हो, जो गुस्सा आपको आता है उसकी वजह से, दैट इज अमोनियम्स. रैंसिड मीन्स, रैंकर या रैंसिड मीन्स रॉटन. हियर देर इज envy, slow brewing anger, and a very personal sort of hatred. Anger, envy, hatred, and bitterness, strong, and for a long long time वो अंदर है. That is rancor. ठीक है, long time, hatred, envy, anger, ये सारा होना चाहिए. That is feeling of hate and continued anger about something in the past. They cheated me, but I feel no rancor towards या against them is a false statement. ठीक है, किसी ने चीट किया है, but I feel no rancor towards or against them is a false statement. So now rancor has two sides. The first is anger, aggression or hate. Okay, one is anger or aggression and second is the hate part. Ammonium has lot of anger. Hate नहीं है उधर. हेट जो है वो एसिड्स में ज्यादा होती है, पर्टिकुलरली नाइट्रिक एसिड. वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन. लॉट ऑफ सप्रेस्ड एंगर, अंदर दबा हुआ गुस्सा है. देयर इज लॉट ऑफ सप्रेस्ड एंगर इन अमोनियम्स. दिस सप्रेस्ड एंगर मेक्स देम वेरी क्रिटिकल. बिकॉज ऑफ दिस सप्रेस्ड एंगर, व्हाट अ पर्सन विल डू इज become censorious, critical. Nothing escapes their criticism. So ammoniums, they are very well placed as critics. बहुत अच्छे critics होते हैं ammoniums. So now criticism leads to extreme cynicism, believing that people are generally selfish and dishonest. तो सिनिसिज्म में 3-4 तो अमोनियम्स पड़े हुए हैं. अमोनियम कार्ब है, कॉस्टिकम है, म्यूर है, ऐसे करके 3-4 अमोनियम पड़े हुए हैं इस रूब्रिक में, सिनिकल में. तो सिनिकल का मतलब दुनिया मतलबी है. डॉक्टर साहब दुनिया मतलबी है तो किसका क्या भला करें आप? दुनिया मतलबी है, सबको अपने काम से काम मतलब है. दिस इज अमोनियम टॉकिंग. ठीक है, ये स्टेटमेंट ऐसे अपने को जज करने पड़ेंगे. पेशेंट बिना फालतू अगर ऐसा बोलता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अपने पास में दिखाना है और ऐसी बातें करना शुरू कर देगा तो वो आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, तो उसको जाने दो. अच्छा, ये आप बात तो सही कह रहे हो, और बताइए. तो जस्ट ट्रिगर हिम. तो उसके मन की पीड़ा वो धीरे धीरे बताएगा. ये डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है वो ऐसा निकल गया, उसको श्रवण कुमार होना चाहिए था लेकिन वो ऐसा निकल गया. मेरी बहू ऐसी निकल गई, लव मैरिज कर ली दोनों ने, मुझे बताया भी नहीं. तो ये अंदर 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 कितने टाइम का एंगर भरा हुआ है, ये जज करो. तो दैट इज एम्बिटर्ड फीलिंग. कई बार यही केस होता है, अपन नहीं कर पाते. ये जानेंगे तो पकड़ेंगे. इफ वी नो देन ओनली वी विल परसीव. So this aggressive side is common in both ammonium and acidums. नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, रेमेडी फॉर हेट्रेड, उसमें भी एंगर होता है, बट उसमें जो एम्बिटर्ड फीलिंग है
वो इट इज मोर टुवर्ड्स हेट्रेड, इसमें एंगर ज्यादा होता है। अब ये एंगर कैसे आता है? अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? नाइट्रिक एसिड जो होती है वो एक्सप्रेसिव होती है, वो दिखा देती है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, अब तू निकल ले यहाँ से। अमोनियम जो है वो अंदर अंदर पी के बैठते हैं, ठीक है। वो जो एक शिव जी का जो विष होता है, गुस्से का विष, वो अंदर दबा के रखते हैं यहाँ, दैट इज अमोनियम्स। कभी नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, दबा के रखेगा और दबी दबी आवाज में बोलेगा अमोनियम। धीरे से आप उसको बोलो, अरे डॉक्टर साहब लाइन में लगना चाहिए था, इनको पहले ही आ गए। तो अब ये समझो कि उससे उसको चिढ़ मची है। अच्छा लोगों को नियम से तो चलना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, नियम से चलना चाहिए, लेकिन होते हैं साहब, बहुत लोग होते हैं जो नहीं चलते हैं। प्रॉब्लम मुझे भी होती है ना। अब वो बोलना शुरू करेगा। तो जस्ट ट्रिगर द पर्सन। हाँ, तो जो अमोनियम्स होते हैं, दे आर मोर रिजर्व्ड एंड एसिड्स आर मोर कम्युनिकेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एंगर। The second side of rancor is holding the things. Anger is kept inside. Reservedness of ammonium is also present in natrums, but in the natrum the grudge is absent. Natrum में जो grudging होती है ना, जो embitteredness होती है, वो कम होती है। नेट्रम कार्ब, जैसे अमोनियम कार्ब है ना, वैसे नेट्रम कार्ब जो है उसके अंदर में भी इस तरह का एंगर होता है, बट नेट्रम कार्ब इज मोर रिफाइंड एंड डिग्निफाइड। अमोनियम कार्ब जो है वो ब्लंट और रिजल्टफुल होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति आया हु वाज हैविंग सम स्किन इरप्शन एंड ही केम, डॉक्टर साहब ये तकलीफ हो रही है, दवाई दे दो। मैं वो स्किन वाले के पास गया था, उसके पास में, और उसने मुझे ये दवाई दी, और 6 महीने मैंने ये दवाई ली। दवाई जैसे ही बंद करता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है, और जैसे ही शुरू करता हूँ फिर वापस सेटल हो जाते हैं। तो फिर मैं उस स्किन डॉक्टर के पास गया, तो उसने मुझे ऐसे बताया कि ये दवाई ले लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये उसने क्या होता है, व्हाट इज उसने? somebody who is trying to help you, you are using a third person, मतलब असम्मानित शब्द का प्रयोग कर रहे हो। उन्होंने, डॉक्टर साहब, ठीक है। तो ये शब्द कहाँ गए? तो इनमें ब्लंटनेस होती है, तो ये ब्लास्फेमी होती है इनकी, अमोनियम्स की, ठीक है। और ये रिजेंटफुल होते हैं, इनको गुस्सा चढ़ा हुआ है कि 6 महीने तक मेरे से पैसे ले लिए और मेरे को ठीक नहीं कर पा रहे। कहना वो ये चाह रहा था, वो एम्बिटर्ड होके आया था। तो यही 2 रूब्रिक लिए मैंने लॉन्ग बैक। तो अमोनियम यूजुअली पकड़ नहीं पाते हैं बिकॉज दे आर रिजर्व्ड, और वो जो एंगर होता है वो इतना आसानी से दिखता भी नहीं है, और कोई हिस्ट्री भी नजर नहीं आती। इसीलिए तो नोज ब्लॉक होता है उनका, अमोनियम का। अपने आप में इतना रिजर्व्ड है, अपने अंदर की चीज वो बाहर निकालना नहीं चाहते, और बाहर की चीज अंदर लेना नहीं चाहते हैं। दिस इज नोज ब्लॉक, ठीक है। तो बाहर की जो नेगेटिविटी है वो उनको प्रॉब्लम देती है, एंड अपने अंदर की चीज वो निकाल सकते नहीं है और निकालना चाहते नहीं है। तो दैट इज नोज ब्लॉक, एंड विच इन्वॉल्व्स योर ईगो ऑल्सो। नोज इज योर ईगो, सॉरी। सो नेट्रम कार्ब जो होता है वो रिफाइंड और डिग्निफाइड होता है, बाकी अमोनियम कार्ब जो होता है वो ब्लंट एंड रिजेंटफुल होता है। नेट्रम कार्ब जो होता है वो इजीली विड्रॉल में चला जाता है कि नहीं मिला तो ठीक है, मैं मेरे हिसाब से मेरा जीवन जीऊंगा। प्रॉपर्टी नहीं मिली कोई बात नहीं, बड़े भाई साहब ने प्रॉपर्टी नहीं दी कोई बात नहीं, मैं मेरे अपना मेहनत कर लूंगा, और वो करता रहेगा। वो विड्रॉल स्टेट में चला जाता है आराम से। So rancor is also the result of disappointment. This disappointment is accompanied by bitterness and gloom.
ये रैंकर जो है साथ में बिटरनेस कंबाइन होता है इसमें। तो अमोनियम जो है दे आर ग्लूमी जस्ट लाइक नेट्रम्स whom they also resemble in their reservedness। तो अमोनियम और नेट्रम में ग्लूमीनेस होती है एंड दे हैव द बिटरनेस। दे आर डिसकंटेंटेड एंड डिसअपॉइंटेड इन लाइफ। तो अमोनियम्स आर डिसकंटेंटेड एंड डिसअपॉइंटेड। अब ये डिसअपॉइंटमेंट कैसे आता है, अब ये जो एंगर है वो कैसे आता है ये समझो। दिस इज अगेन द कोर ऑफ अमोनियम। इसलिए आता है क्योंकि अमोनियम को लगता है कि सब कुछ आइडियलिज्म है, सब कुछ अच्छा है, कि ये बेटा है तो ये श्रवण बेटा है, लेकिन वो बेटा श्रवण नहीं, वो कुछ और निकलता है। जब वो कुछ और निकलता है तो वो किस फेज में चला जाता है, वो सिनिकल वाले फेज में चला जाता है कि देखो कितना स्वार्थी है, अपने बाप की नहीं कर रहा है, अपने फादर की नहीं कर रहा है। तो वो सिनिकल वाले फेज में चला जाता है। तो यही है उसका कि अमोनियम जो है वो दुनिया को एक आइडियलिस्ट के रूप में देखते हैं, और जब वो पिक्चर उनकी धराशायी हो जाती है तो दे गो इनटू अ फेज ऑफ एंगर एंड देन रिजेंटमेंट एंड देन इनटू अ फेज ऑफ सिनिकल। सो एग्रवेशन बाय बेथिंग, बेटर बाय लाइंग डाउन, बेटर बाय स्ट्रेचिंग। ठीक है, इनको अगर बॉडी की अगर स्ट्रेचिंग करवाते हैं तो तकलीफ होती। डॉक्टर साहब एक्सरसाइज तो होती नहीं है, सूर्य नमस्कार नहीं होता है, तकलीफ होती है। कैसे तकलीफ होती है? अरे डॉक्टर साहब को पता नहीं है मुझे तकलीफ होती है। तो सोचो ये एग्रवेशन बाय स्ट्रेचिंग है। नाना डॉक्टर साहब पसंद नहीं है उसको। बेथिंग इज एग्रवेशन। तो अब अमोनिया कैसी होती है? एकदम गंदी, ठीक है, गंदी सी स्मेल होती है। और उसको सूंघ के मतलब जो ये जो फेस बनता है ना अपना, वो ही अमोनियम के अंदर का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, डिस्गस्ट एंड एक्सट्रीम चिड़, एक्सट्रीम रैंकर। तो जो पेन होते हैं अमोनियम के वो भी ऐसे ही होते हैं, बाइटिंग काइंड ऑफ पेन। As the nature of ammonia is biting, so the pains are also burning and biting. So the discharges are acrid, yellow and watery and might even cause ulceration. तो जो पैथोलॉजी होगी अमोनियम की वो कैसे होगी? पैथोलॉजी जो है वो ऑलवेज अल्सरेटिव होगी अमोनियम की, क्योंकि वो एंग्री है। एंगर ऑलवेज जो है अंदर में अल्सर बनाएगा। हो सकता है इंटरनल पार्ट्स में अल्सर बन जाए, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाए, क्रोन्स डिजीज हो जाए इंटरनल पार्ट्स में, बिकॉज देयर इज अ रिजर्वनेस। अगर स्टोमेटाइटिस होंगे, माउथ अल्सर बनेंगे ना, तो भी बाहर वाले पार्ट में नहीं, अंदर गले के अंदर में बन जाएंगे। तो ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ बना रहा है अल्सर। अगर अंदर बना रहा है तो समथिंग विच इज हिडन, समथिंग इज रिजर्व्ड इन दिस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी। ये समझना चाहिए अपने को। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन बिल्कुल ब्राइट रेड, स्वोलन और बर्निंग होंगे। इन्फ्लेमेशन भयंकर, एंड एंगर की वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो इसके जो इरप्शन थे ना वो भी रेडिश थे, बिल्कुल रेड। और अभी भी वो इंसान क्रॉस होता है, क्रॉस होता है, ही डजंट रिकॉग्नाइज मी, वो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो वो ब्लास्फेमी अभी भी चल रही है उसके अंदर। सो एग्जॉशन एज इन द एसिडम्स, एग्जॉशन होती है, साइनोसाइटिस एंड कोल्ड्स। जो पैथोलॉजी इरिटेशन से रिलेटेड होती है, कोल्ड है, साइनोसाइटिस है, एंड साइनस जो होते हैं वो अगेन अंदर होते हैं, तो इट कम्स फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड बिटर फीलिंग्स। लंग प्रॉब्लम, एम्फीसीमा, अंदर ही अंदर लंग्स डैमेज होते जा रहे हैं। कार्डियक प्रॉब्लम, स्टमक कंप्लेंट्स, शियाटिका, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स विथ कॉन्ट्रैक्चर। ये फाइट नहीं कर पाता है, फाइट नहीं कर पाता है, लेकिन ये होता रिजिड है अंदर से। उसका ओपिनियन जो बन गया वो बन गया। तो वो रिजिडिटी की वजह से जो जॉइंट्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देर आर कॉन्ट्रैक्चर, मतलब फाइब्रोसिस हो गया, या फ्रैक्चर के बाद में अमोनियम का
जो जॉइंट होता है वो मूवमेंट बहुत लेट करता है, क्योंकि वो रिजिड और फिक्स हो जाता है। वो जो हर्ट होती है वो इतनी जल्दी नहीं निकलती, उसको हीलिंग नहीं होती है ना बेसिकली, और हील होता भी है तो भी वो ऐसा हील होगा कि वो चिपक जाएगा, फाइब्रोसिस और कॉन्ट्रैक्चर में चला जाएगा। और आरे अगर हो गया सपोज उसको, ठीक है, तो जो जॉइंट्स हैं वो बहुत जल्दी डिफॉर्म्ड हो जाएंगे उसके। सो एम्बिटर्ड एंड टिमिडिटी इज अमोनियम। दिस इज द मैथमेटिक्स ऑफ अमोनियम। एम्बिटर्ड, एम्बिटर्ड यही थीम है इसकी, अंदर भरा हुआ इतने सालों का गुस्सा। और सारी जो पैथोलॉजी है वो गुस्से वाली ही आएगी। अल्सरेशन, एसिडिटी, एलर्जिक राइनाइटिस, स्टोमेटाइटिस, देन बॉइल्स ऑन द स्किन, यही सारी चीजें मिलेगी। नाउ एनाकार्डियम, द ब्यूटीफुल थीम ऑफ एनाकार्डियम। एनाकार्डियम में फर्स्ट कीनोट इज फील्स एज दो ही हैड टू विल्स, वन कमांडिंग हिम टू डू what the other forbids. You know, the keynote, the Allen's keynote is quite a very comprehensive work. If you read one line, it completes the whole personality. So this line is the theme of Anacardium, that there are two wills, one commanding him to do what the other forbids. Sudden loss of memory, everything seems to be in a dream. Patient is greatly troubled about his forgetfulness, confused, unfit for business. Sudden loss of memory, एकदम acute memory चली गई। पर साथ में ये duality होनी जरूरी है। Sensation of a hoop or band around a part. क्यों होगा band या hoop around a part? Because somewhere there is control ओवर एनाकार्डियम, इसके ऊपर कंट्रोल है। एज ऑफ ए डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट प्रेसिंग एज ऑफ ए प्लग ऑफ इनर पार्ट्स। हेडेक रिलीव्ड एंटायरली व्हेन ईटिंग, हेडेक रिलीव्ड एंटायरली बाय ईटिंग सोराइनम एंड एनाकार्डियम। व्हेन लाइंग डाउन इन बेड एट नाइट एंड व्हेन अबाउट फॉलिंग asleep, वर्स ड्यूरिंग मोशन एंड वर्क। As soon as eats, headache is over. Swallows food and drinks hastily, symptoms disappear while eating. So eating से the things appear better. Great desire for stool. अच्छा, कंफर्मेशन के लिए आपको एनाकार्डियम अगर दे रहे हो तो यू शुड आस्क कि खाने के बाद कैसा लगता है, भूख लगती है तो कैसा लगता है। ये एक कंफर्मेटरी पॉइंट है फॉर एनाकार्डियम। Great desire for stool, but with the effort, the desire passes away without evacuation. Rectum seems powerless, paralyzed with sensation as if plugged. Irregular peristalsis or overaction is nux. Again, in the stool also there is duality. Do you appreciate the duality? That there is desire for stool, but again, there is no evacuation because the desire passes away. At one time there is desire, and just after few minutes the desire is gone. So there are two wills everywhere, two wills. Theme of anacardium is ailment from abused after being, ailment from domination and punishment. ये सेंसिटिव स्पॉट होता है एनाकार्डियम का। द थ्री थिंग्स, दैट इज एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज्ड, डोमिनेशन एंड पनिशमेंट, दीज थ्री थिंग्स। अब जो एब्यूज होता है एनाकार्डियम के लिए, एब्यूज को समझो। दिस एब्यूज इज नॉट अ स्लाइट एब्यूज, इट इज हाई ग्रेड एब्यूज। और इतना एब्यूज होता है कि उसको दो भाग में डिवाइड कर देता है। उसकी जो पर्सनालिटी है एनाकार्डियम की, उसको दो में डिवाइड कर देता है। द विल इज
shattered into two parts, which should not be there. One person has one will and it should be in a straight line. But यहाँ पे there are two-way processing. Two wills means two thought process. The nervous system goes into two divisions. The entire personality is divided into two parts. Why? Because of punishment. क्या किया? छेंक दिया, थप्पड़ पड़ी. क्या किया? घूम के आ गया, बाहर चला गया, ये थप्पड़ पड़ी. और थप्पड़ भी कैसी पड़ी? इतनी अच्छी पड़ी कि बच्चा सहम सहम के और 1 घंटे तक कोने में बैठ के रो रहा है. वो उस लेवल का एब्यूज उसको मिलता है. तो एनाकार्डियम तो एनाकार्डियम बन सकता है. ठीक है. होम्योपैथ्स की आदत बहुत खराब होती है, जल्दी से चीज को ताड़ लेते हैं कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में. कुछ ना कुछ लिंक तो बिठाया था अभी. तो ये एक ही स्लाइड है जो मैंने ब्यूटीफाई करने की कोशिश करी है, बिकॉज टाइम ही नहीं था. आई स्टार्टेड प्रेजेंटेशन ऑन फ्राइडे. तो एंटागोनिज्म विद वन सेल्फ. देखो, पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट मिला तो अब इंसान को गुस्सा आएगा. पर्सन विल गेट एंग्री एंड व्हाट ही विल डू इन एंगर, आइदर ही विल रिवोल्ट और आइदर ही विल सबड्यू. ठीक है. अभी रिवोल्ट है तो उसको रिवोल्ट करने की बहुत इच्छा होती है, तगड़ी, स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ रिवोल्ट. बट ही, बिकॉज ऑफ द मॉरल थिंग्स कि ये मेरे फादर हैं या मेरे से बड़े हैं तो मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो उसको रोक लेता है. ठीक है. तो यहां उसके लिए फिर दो बातें बन जाती है कि वेदर आई शुड रिवोल्ट, वेदर आई शुड नॉट. तो यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसके लिए. ठीक है. अब दिस कंफ्यूजन जब धीरे 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 एब्यूज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो ये जो एंगर है वो भी स्ट्रांग होता जाता है. ठीक है. दिस एंगर और डिफायंस और द फीलिंग ऑफ रिवोल्ट और क्रूअलिटी या टू हिट बैक, वो स्ट्रांग होता जाता है. अब क्या करता है कि ये घर में तो बनता है, सबड्यूड बन के रहता है, लेकिन जो इसके अंदर का एंगर है वो जैसे ही घर के गेट को क्रॉस किया, उसके अंदर का एंगर बाहर निकल के आता है. तो किसी डॉग को लात मारी, स्कूल गया तो स्कूल में किसी को छेड़ दिया, मैडम के कुछ कर दी. तो वो जो एंगर है और जो एग्रेशन है वो उसका घर से बाहर निकलता है. तो घर वाले आश्चर्यचकित होते हैं कि ये तो घर में ऐसा रहता है, इसकी शिकायत आ कैसे जाती है. एंड बाहर जाकर के ये सबको मारना पीटना और किसी की सुनना नहीं और ऐसा हो जाता है. मैनी ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स ये थोड़ी बताते हैं अपने को कि हमने उसके साथ में ऐसा किया है. वी टेक अ रॉन्ग रूब्रिक, हार्ड ऑन इंफीरियर एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर. ये रूब्रिक ले लेते हैं कई बार, लेकिन ये रॉन्ग रूब्रिक बन जाता है. ये समझना जरूरी होता है कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है. बच्चे से बात करो, वो बच्चा बताएगा. लॉन्ग बैक, अराउंड 7-8 years back, I had prescribed anacardium to a child who came from Bombay, और he was in a state of severe depression because father जो थे उसके, उसको एब्यूज करते थे, उसको बहुत मारते थे, बहुत प्रेशर, मारना नहीं सॉरी, बहुत प्रेशराइज करते थे उसको पढ़ाई के लिए. तो उसके मन में ये आता था कि मैं पढ़ूं और मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे टेनिस प्लेयर बनना है, मुझे पढ़ना नहीं है. उसके फादर प्रेशराइज करते थे कि तू आईआईटी में जाए, बिकॉज ही वॉज ए आईआईटीएन. मुझे तुझे आईआईटीएन बनाना है. उसकी इच्छा नहीं थी, तो वो अपने मन की नहीं कर पा रहा था. तो देन अगेन ही वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ डुअलिटी. वहाँ उसके दो स्टेट ऑफ नेचर समझ करके आई हैड गिवन हिम एनाकार्डियम. तो वो ठीक हुआ था आफ्टर एनाकार्डियम. तो ये एनाकार्डियम जो होते हैं वो
पनिशमेंट और डोमिनेशन की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इतना डिस्टर्ब होते हैं, दे आर मॉर्बिडली डिस्टर्ब। तो उनकी जो आइडेंटिटी होती है, इनिशियली कन्फ्यूजन में आते हैं कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, ठीक है। वो कन्फ्यूजन ऑफ रिएक्शन से चले जाते हैं एंटागोनिज्म में। क्यों? क्योंकि बाहर उसको कंफर्ट आता है ना कि मैं बाहर अपना गुस्सा निकाल पा रहा हूं, तो वैसा घर में क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो धीरे धीरे वो जो कन्फ्यूजन होता है वो एंटागोनिज्म में कन्वर्ट होता है। अब ये जो एंटागोनिज्म है, ये डिल्यूजन डबल बीइंग में चला जाता है, मोर डीप सीटेड स्टेट ऑफ डिलीरियम दैट आई एम नॉट सिंगल, आई एम डबल, ठीक है। अब ये दो पर्सनैलिटीज होती है, सबड्यूड एंड कॉन्ट्ररी एंड डिफाइंड पर्सनैलिटी, ये दो चलती है साइमल्टेनियसली। जैसे रिसेंटली आई हैड अ चाइल्ड, व्हेन मदर इज नॉट पेइंग अटेंशन, तो मदर के सामने ऐसे भीख मांगेगा, वो प्रे करेगा मदर से कि प्लीज 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 मुझे अपनी गोद में बिठा लो, प्लीज 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 मुझे प्यार करो, प्लीज प्लीज, ऐसे करेगा। एंड द मोमेंट ही इज एंग्री, he will give left and right to the parents. So this was the duality of this child, and I gave him anacardium. And चलो बता ही देता हूँ, इस चीज पे आने के लिए बहुत दिमाग लगाया, बहुत। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इस केस में, दैट दिस चाइल्ड वॉज इन ब्रीच प्रेजेंटेशन and mother wanted that this child should be aborted. Mother did not wanted this child, but because of the pressure of the in-laws, she had to keep the pregnancy. It was early pregnancy, immediately after 3 to 4 months of marriage. So she had to keep this pregnancy. She even took the pills, but still the child could not get aborted. She had to keep the child. Important thing is, the child was having breech presentation, and this was the thing which was bothering me in the entire case. If mother does not want the child, why the child is in breech presentation? Why the hell is this child in breech presentation? She took the pills. She even kicked the abdomen. She even hit her own abdomen. I do not want this child. But still the child was there in the uterus, and it was breech presentation. So I interpreted this thing as the life of the child is threatened, but the mother did not wanted this pregnancy, but still she had to keep the pregnancy. You know, if the child is supposed to be aborted, or if there is a threat, then what should be the presentation of child? The head should be down, no? The head should be down when there is acute threat to the child, and the labor pains should be induced early, because the mother wants to remove the child, but the child is lying comfortably in breech position. So this is again antagonism. Mother's pregnancy was again antagonism. She does not want the pregnancy, still she has to keep. There is antagonism there. The child was supposed to be out, but he is again in the breech presentation. So again this is antagonism, and the child is supposed to, one time he is praying and one time he is angry. Again this is a delusion of duality. So everywhere this antagonism is to be seen. So this is anacardium. Impulse, morbid, contradictory is anacardium. Contradictory impulses are coming. I should fight. I should kick him. So this is morbid impulse. Will sensation as if he had commanding what the other forbids. So the confusion, first there is impulse, morbid. Then there is confusion in the will. Then there comes the delusion. The delusion is he gets a feeling that devil speaks in one ear and the angel speaks in the other ear. I should behave like a rakshas, I should behave like an angel. तो जहां पर डोमिनेशन हट जाएगा,
When the domination is over, then he will become a demon. When there is domination, he will become an angel. So this duality you will see. Delusion, devil speaking in one ear, prompting to murder. Angel in the other ear, prompting to acts of benevolence. ठीक है, तो एक जो है खून कर दे इसका सामने वाले का, फादर इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतना परेशान किया, इतना मारा है, ये तो आदमी का खून कर दूंगा. और दूसरा, अरे दूसरी ऑपोजिट फेज. ठीक है. सो दीज आर द टू फेजेस of split will. Delusion separated, body mind are separated. Remember, there is the conflict of will. यहाँ पे प्रॉब्लम will से आ रही है. will means action, करना या नहीं करना, ये कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर कि करना है या नहीं करना है. ठीक है, दिस इज will, not personality. Split personality is alag. This is split will at first, going into different personality. Delusion separated, body soul, body is separated from. अभी एलुमिना देखा था अपन ने, एलुमिना में एक अलग चीज थी, उसमें जो स्प्लिटिंग था वो दूसरे पर्सन में मर्ज होने वाला था. यहां पर में टोटली डिफरेंट है, यहां पर में टोटली दो अलग चीज निकल के सामने खड़ी हो रही है. सो द मैथमेटिक्स ऑफ एनाकार्डियम इज ब्रेकिंग ऑफ विल इनटू टू ड्यू टू डोमिनेशन एंड पनिशमेंट, कॉजिंग एंटागोनिज्म इज इक्वल टू एनाकार्डियम. ठीक है. सो दैट मदर, शी वॉज पनिशिंग द चाइल्ड फॉर नथिंग एंड शी वॉज बीइंग डोमिनेटेड बाय द इन-लॉज फॉर नथिंग, एंड द रिजल्टेंट इफेक्ट वॉज द चाइल्ड डेवलप्ड टू विल्स in the womb itself, in the intrauterine life itself, whether I should cling to the mother or whether I should go out. Okay, so this is about anacardium. So this is all about today's mathematics of few remedies. I hope this will be useful in our practice. Directly, I tried to make out the whole mathematics, including the keynotes, including the mind, and we focused on the core feeling of the remedies. So I think this is very interesting. We will be continuing 2-3 remedies in each class. We will be adding, and from A to Z we will prepare a data bank. It will be easy for us to study, and whenever we are having or we are prescribing a new remedy, we'll add into this database. So it will be open for all of us. Okay, so thank you for patience, for patientful listening. Thank you.